Bismillahirrahmanirrahim. The lecture of software requirements and specification. Today we will discuss requirement solicitation and its related concepts. This is the agenda of the lecture. First we will say what is requirement solicitation, then what is the purpose of requirement solicitation, basic requirements to use, what are different types of requirement solicitation techniques, and capability of requirement solicitation technique, what are the different elicitation techniques, and their pros and cons. Requirement elicitation is defined as the process of obtaining a comprehensive understanding of stakeholders' requirements. आपको पता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें यूज़र्स होते हैं, उसमें डेवलपर्स होते हैं, उसमें डिज़ाइनर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। तो उन से अगर लेट्स सपोज एक सॉफ्टवेयर हाउस जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहा है तो उसने डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हुए एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है कि इस वक्त कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उसको कैप्चर करने का रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन कहते हैं। Requirements elicitation is the initial and main process of requirement engineering phase. It's a complex process, requirement engineering, and no requirement solicitation technique has capability of finding all of the requirements. So we have to use variety of techniques that will help us to cover all the requirements, resulting in more effective elicitation. सो जैसा कि मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन डिफरेंट टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, और इन डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हमारे पास इंटरव्यू एक टेक्निक है, क्वेश्चनर एक टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन इज़ अनदर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड देयर आर वेरियस elicitation techniques available there. Which one is best? It's very difficult to decide which one is far better than other. It in fact depends upon what type of application, what is the nature, what is the complexity of the application जो आप बनाने जा रहे हैं, और हर एक तरह की एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज होती है। It is impossible to get all solutions from an individual or any particular group. Different stakeholders are involved in this process from different fields, and high quality requirements are only obtained when right people are chosen and are involved in elicitation process. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक का ओवरव्यू है। इसमें procedures to obtain user requirements, implement in the system to fulfill users requirement, and as I already stated that the selection of appropriate elicitation technique depends upon the type, nature, size and complexity of the application, as well as the available sources like the available time, budget, and the appropriate people. As I have already stated that there is no ideal technique that works in all situations. One technique is suited for one particular situation and other works best at any other situation. And weakness of one technique can be neutralized or compensated by some other technique. Using variety of techniques ensures uncovering most of the requirements and therefore results in effective requirements elicitation. यहाँ से ये बात पता चलती है कि आपने
जब अपने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना है तो उसमें आप एक से ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पर्पस ये होता है कि हमें जो 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 डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं, दे नीड टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट, दे नीड टू अंडरस्टैंड comprehensively what different stakeholders wants and how is it possible to fulfill those requirements. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम कोई इनअप्रोप्रिएट एलिसिटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर एलिसाइटिंग रिक्वायरमेंट्स तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। Applying inappropriate technique has negative impact on the system development, which in results affects requirements of stakeholders. Most of the project fail due to requirements inappropriate elicitation of the requirements. And this is somehow the introduction that okay, so far we studied an introduction of requirements elicitation techniques. अब हम देखेंगे कि requirement elicitation techniques की classifications को. One of the classification is कि different requirement elicitation को in 4 different major areas में divide किया हुआ है. One is the traditional techniques जिसमें हमारे पास interviews, questionnaires या surveys and document analysis. These 3 different requirement elicitation techniques lies in traditional technique category. सेकंड कैटेगरी हमारे पास है कंटेक्चुअल टेक्निक की. अब इस कंटेक्चुअल टेक्निक के अंदर जो हमारे पास एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं उनमें ऑब्जर्वेशन है, एथनोग्राफी है एंड प्रोटोकॉल एनालिसिस है. थर्ड कैटेगरी ऑफ elicitation technique is the collaborative or group techniques, prototyping, joint application development, brainstorming and group work. These are different elicitation techniques lies in this category. The fourth and last one category is the cognitive techniques, in which there are different elicitation techniques like lettering, chord sorting. इसमें आपको ग्रिड्स एंड क्लॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन जो है वो उसको भी स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन, इससे पहले कि मैं डिफरेंट एलिसिनेशन टेक्निक्स आपके सामने रखूँ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके मतलब ये है कि requirement elicitation techniques are basically the ways and procedures to obtain user requirements and then implement them in the system to be developed so that it satisfies the needs of stakeholders. जैसा कि मैंने कहा कि requirement elicitation techniques are basically the ways and procedures, are techniques. The purpose is to get or to capture or to obtain user requirements and then that requirements implement in the system. The objective is to fulfill the users or customers requirement completely, comprehensively, correctly, without any ambiguity. Okay, there is not just one factor that affects technique selection. There are many factors responsible for the selection of appropriate elicitation techniques. As I already stated, that the nature of application, the type of application, their complexity, what is the size of available people, what are the resources available for that application. All these are different factors that affect and that decides which elicitation technique is better. Okay, now let's come to the first elicitation techniques, lies in traditional technique category. This one is interviews. As I think that you are somehow familiar with this concept. It is conversational or verbal method which is considered easy and effective for idea sharing and expressing needs between analysts and stakeholders. Interviews are the most employed and popular ones for requirement elicitation.
ये जो इंटरव्यू टेक्निक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वर्बल मेथड है, इजी और इफ़ेक्टिव है, मोस्ट एम्प्लॉयड है, और ये मोस्टली ये यूज़ होता है. इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद वन और टू पीपल्स, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिजल्ट्स which finally leads to requirements. So there are different types of interviews, as I think that you are also somehow familiar with this one. The structured or closed interviews, एंड उसकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जो स्ट्रक्चर और क्लोज इंटरव्यू होते हैं वो थोड़े फॉर्मल से होते हैं, प्री डिफाइंड उनमें क्वेश्चनियर्स और क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने होते हैं, और इट इज़ कंसिडर्ड एज इफेक्टिव टेक्निक एंड प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डाटा. इसमें क्वांटिटेटिव डाटा होता है क्योंकि प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव बड़े डिसाइड्स होते हैं, बड़ा फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, तो इसलिए इससे क्वांटिटेटिव डाटा जनरेट होता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज does not allow generation of new ideas and expressions but are preferably effective. इसमें क्योंकि प्री डिफाइंड सब कुछ होता है तो इस वजह से कोई नए आइडियाज़ इससे जनरेट कम होते हैं. So these are somehow the characteristics. What are the advantages by using these techniques? The pros: first one is no biasing, as questions are checked before हैंड. आपने प्री डिसाइड किया होता है, इसलिए इसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती है. इसके अलावा इसके जो कुछ और भी एडिशनल जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उसमें है कि इंटरव्यू कैन बी रिपीटेड टू चेक रिलायबिलिटी ऑफ डाटा. और इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ड्रॉबैक ये है कि इंटरव्यू में भी अनकंफर्टेबल or because of formal approach somehow. So the second one, जो इंटरव्यू की एक और टाइप है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. उसमें इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड एंड अनप्लैन्ड क्वेश्चंस. अब यूँ कह लें कि इसके अंदर आप कुछ पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि आपने क्या पूछना है, और कुछ अनप्लैन्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ दीज टू. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कंसिस्टेंसी, एक इसका एडवांटेज है. दूसरा ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस अलाउ इंटरव्यूई to share new ideas, themes and their experience and exposure. So आपको इसमें स्ट्रक्चर्ड पोर्शन से कंसिस्टेंसी मिलती है, अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लैन्ड पोर्शन से आपको इसमें न्यू आइडियाज मिलते हैं. ओके. इसके डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं होता, अनप्लैन्ड है, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. अगर मैसिव आपके पास कम्युनिटी है जिसको इंटरव्यू करना है तो इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. एंड अनदर डिसएडवांटेज इज जो आप फाइंडिंग करते हैं उनको हार्ड टू जनरलाइज, इट्स डिफिकल्ट वन. द third type of interviews is the unstructured or open interviews. इससे पहले आप structured interview देख चुके, उसके मतलब आपको पता चल गया उसकी जनरल characteristics क्या है, उसके advantages क्या हैं, उसके disadvantages क्या हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन इंटरव्यूज. इट इज़ एन इनफॉर्मल इंटरव्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटेनिंग अनप्लैन्ड क्वेश्चंस. इसके अंदर कोई प्लैन्ड क्वेश्चंस नहीं होते. That is why it producing qualitative data. It is an open discussion between the analyst and the different stakeholders producing qualitative data. ओके. इसमें न्यू आइडियाज़ एंड ओपिनियंस आर जनरेट होते हैं, और ड्यू टू इनफॉर्मल अप्रोच इंटरव्यूअर मे फील इजी टू प्रॉपरली आंसर क्वेश्चंस. दिस इज आल्सो एन एडवांटेज ऑफ दिस वन. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज इंटरव्यूअर कैन बी बायस्ड इन आस्किंग क्वेश्चन. दिस इज द लिमिटेशन. द सेकंड one is difficult to repeat in case
data reliability is checked. Okay. दिस अब हम एक समरी है, ये जो 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं हम एज ए होल इनको देखते हैं और एज ए होल दिस टेक्निक के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक नज़र देखते हैं. फर्स्ट वन इज के द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरव्यूज एज एन एलिसिटेशन टेक्निक इज इट इज़ गुड फॉर कम्प्लेक्स टॉपिक. अगर कोई कम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसके लिए एक अच्छा है. रिच इन इंफॉर्मेशन एंड आर गुड इन एलिसिटिंग डिटेल्ड रिक्वायरमेंट. ओके. और एम्बिग्युइटीज जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है. डिफरेंट अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान दो डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा है तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक. Okay, the non-responsive remains low, provide overview of the whole system. These are the different advantages of using this technique. The disadvantages regarding this is the you cannot involve a massive community for interviews. That is why a small number of people involved in this can be taken for this elicitation technique. The second one is it is difficult to set appropriate time for interviews with all of the people, and information cannot be gathered from large population. As I already said, quality of data gathered depends on the skills of interviewer is also one of the disadvantage of this technique. Now come to the second elicitation technique lies in the category of traditional techniques. Document analysis. This technique involves analyzing and gathering information from existing documents and other related information. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है किसी भी फॉर्म के अंदर, उसको एनालाइज करना, उसको गैदर करना, इसको डॉक्यूमेंट एनालिसिस इस टेक्निक इसे कहा जाता है. दिस टेक्निक कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू इनिशिएट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस. अगर आपने एक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन किसी भी सिस्टम की करनी है तो इस टेक्निक से आप इनिशिएट कर सकते हैं. ये इफ़ेक्टिव है. पहले उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके जो एग्जिस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ पे पड़ी है उसको अंडरस्टैंड करें, उनमें से कैप्चर करें रिक्वायरमेंट्स. देन यू कैन यूज़ अदर एलिसिटेशन टेक्निक्स फॉर फर्दर प्रोसीडिंग. ओके. Human interaction is needed sometimes to add the information. This information, the information gathered in this technique may vary depending upon the documents available. And now we will discuss another elicitation technique, which is document analysis. And as we already know that the core purpose of these techniques is to capture users, different stakeholders' requirements comprehensively. And as far as concerned the document analysis, this technique involves analyzing and gathering information from existing documents. And this technique is far effective if we use from the starting point of elicitation process. So this technique can be effectively used to initiate requirement elicitation process. It includes analyzing documents in the form of design documents, templates and manuals of the existing system, and this technique is adapted when existing system needs to be replaced or enhanced. और ये टेक्निक ज़्यादा फिट उस सिचुएशन में है जब आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या उसको एनहांस करना चाह रहे हैं. So this technique is far better to use for this particular
type of project. Another important point here is that the facts and figures studied must be checked to see if they are valid and relevant, otherwise they will be of little use to the analyst. So this is also one of the important aspects. Now we will discuss what are the different uh, pros and cons. uh, as far as the advantages concerns, it is helpful when stakeholders and users are not available. Fine. The second one advantage is it also helps business analyst to get proper understanding of the organization before meeting the stakeholders there. सो इससे एक आपको एक जो एनालिस्ट है उनको एक बिग पिक्चर जो है उनके सामने वो क्लियर हो जाती है जब वो बाकी डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक इंटरव्यू करते हैं, तो उनके सामने वो पहले से पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट के जरिए उसको अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं. इट प्रोवाइड्स वेरी यूजफुल हिस्टोरिकल डाटा. It also can be useful to frame questions for interviews, can be used for requirements reuse, and it's an inexpensive technique. The limitations or disadvantages of this technique is it is hard for analysts to imagine the environment in which the new system works. This is one of the major drawback. एनालिस्ट आप एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो दूसरे पैराडाइम की क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, एनालिस्ट को इस पे खासा मेहनत करना पड़ता है, खासा इस पे उसको प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इट्स हार्ड फॉर एनालिस्ट. Another disadvantages is it does not allow discussion with stakeholders and other experts. Therefore, it is not encouraged if not used in combination with other techniques. इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ एनालिसिस करना होता है, इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होती. इसमें जब आपकी इंटरेक्शन नहीं होगी तो आई थिंक के इसमें फिर एम्बिग्युइटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन, इनकम्प्लीटनेस. So all these factors still remains there. Now we will discuss another elicitation technique, which is questionnaire or survey. This elicitation technique is also under the category of traditional techniques. जैसा कि मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी जो क्लासिफिकेशन है एक एलिसिटेशन टेक्निक्स की. अभी तक हम पहली जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स की कैटेगरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं. उसके अंदर हमने इंटरव्यूज़ को, एलिसिटेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट एनालिसिस को डिस्कस किया. अब हम एक क्वेश्चनेयर या सर्वे विच इज़ another important requirement elicitation techniques, इसको हम डिस्कस करते हैं. पहली बात तो ये है कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ eliciting requirements and it is most useful in this situation when face-to-face interviews, online meetings are not possible with stakeholders. Questionnaires or surveys can be used there. So अगर आपके सिस्टम के अंदर आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हैं, आप उनके साथ ऑनलाइन या फेस टू फेस इंटरेक्शन या इंटरव्यूज नहीं कर सकते. सो देन वी कैन यूज दिस टेक्निक टू एलिसिट रिक्वायरमेंट्स. सो और इसमें एक मैसिव कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है. ओके. This technique is also used to collect requirement from a large group of population, as I already stated. But one thing that should be considered, that the questionnaire must be or should be clear, well defined and precise, besides including the domain knowledge. The advantages related to this technique is it reach large number of people within a short time.
as I already stated, and it is useful when same question is asked to large number of people. एंड इनफैक्ट इसमें क्योंकि सेम क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है तो कोई बायस नहीं इसमें होगी. इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर elicitation techniques. These are the disadvantages related to this technique. It cannot get further clarification regarding the problem what analyst actually wants from the user. Second disadvantage is questions can be misinterpreted. आपने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको एक स्टेक होल्डर्स उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा है, दूसरा स्टेक होल्डर उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा है. तो इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन जो है वेल डिफाइंड प्रिसाइज नहीं है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं. ऐसा भी पॉसिबल होता है कि समटाइम इसमें यूजफुल फीडबैक हमें रिसीव नहीं होती. रीज़न इज़ बिकॉज द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उस इंटेंसिटी के साथ इसको सीरियस नहीं ले रहे होते और ड्यू टू सम अदर रीजंस. सो देयर इज़ अ चांस कि हमें यूजफुल फीडबैक इसमें ना मिले. समटाइम्स क्वेश्चंस एम्बिग्युइटी may arise used for general purpose software. It's difficult. Okay, the next elicitation technique lies in the traditional category is the introspection. It can also be used to initiate requirement elicitation process and is used in combination with other techniques. इसमें होता क्या है कि analysts work for what they imagine and observe by themselves how a system design should be. This is somehow the basic concept behind this technique, and this technique is effective with users who have a lot of experience of their own fields but have less knowledge about the other fields as well as the new systems. So the basic advantages by using this technique, there are almost no cost for implementing this technique. In fact, it's the imagination and observation, and it's easy to implement. It can act as a good initial step to start requirement elicitation. The disadvantages associated with this technique, it is hard for analysts to imagine the environment in which the new system works, as this is ये disadvantage document analysis technique का भी था कि उसमें वो टेक्निक यूज़ की जा सकती थी जब आप एक सिस्टम को एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में शिफ्ट करना चाह रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम है, अब हम उसको मोबाइल पैराडाइम में लेके आना चाह रहे हैं, तो उस नए पैराडाइम के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो एनालिस्ट के लिए ज़रा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. तो इस टेक्निक के अंदर भी एनालिस्ट को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. इट डज नॉट अलाउ डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स एज in previous technique. Therefore, it is not encouraged if not used in combination with other techniques. Analysts and stakeholders need to be well known about the domain. So these are the different elicitation techniques that are categorizing in traditional category. So I hope you understand the concepts.